Now the question is that we have already discussed about the imperative sentence, amar sentence, commanding sentence. Now move forward that if uh, offer and acceptance is conveyed through writing in written way, whether the written sentences are acceptable, not spoken, just written, are acceptable for offer and acceptance or not. Hanafi and Malki are of the view that contract can be concluded through writing, irrespective of whether the parties are present in one session. Like contracting session, or one of them is missing. It is customary in event of absence of one party that an offer may take the form of a letter. It this means that if a party has been presented a written offer in form of a written letter, as the guy second party will receive the letter where offer is in a written form and he accepted, then we will say that contract is executed. And it doesn't matter that the session is different. Why? Because two sessions will be considered same session, connected session, as the letter will be presented to the other party. It means that offer has been made at that time, and after reading the sentence offer written letter, as the second party accept it, it will be considered that session is same. तो इसका मतलब ये हुआ, हनफी और मालकी का कहना ये है कि बाज औकात ऐसा होता है कि आप तहरीरी सूरत के अंदर अपनी ऑफर पहुंचाते हैं, और तहरीरी सूरत में ऑफर पहुंचाने का मतलब ये है कि एक पार्टी किसी और जगह बैठी हुई है, उसने ईमेल लिख दी, उसने खत लिख दिया, और जैसे ही दूसरी पार्टी को खत पहुंचा, खत खोला तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं आपको अपनी चीज बेची। तो दूसरी पार्टी ने जैसे उस खत को पढ़ा और उसने कहा ठीक है मैंने कबूल की या मैंने उसको खरीद लिया, तो कहते हैं कि जो खत उसके पास पहुंचा है वो ऑफर कहलाएगा, और जो उसने कह दिया कि मैंने बेचा या उसने भी रिटर्न सूरत में दिया तो वो उसका एक्सेप्टेंस होगा, और जैसे दूसरी सेलर को पहुंचेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा। तो हनफी और मालकियों का ओपिनियन है कि जनाब भले लेटर लिखने वाला लाहौर में बैठा हो और जिसको लिखा गया वो इस्लामाबाद में बैठा हो, तो रिटर्न सूरत के अंदर ऑफर भी हो जाती है और एक्सेप्टेंस भी हो जाती है, नो प्रॉब्लम। सो देयर इज opinion of Hanafis and Malki, if offer is in a written form on letter, the other guy who answered also through a phone call or through a written letter or through an email, that offer and acceptance will be considered valid and the contract will be executed. Now Imam Shafi has different view. Some of the Shafi jurists have opposed this opinion, maintaining that one who is capable of contracting through spoken words must not resort to writing. तो कहते हैं कि जो शख्स बोल सकता है और उसको जुबान दी हुई है अल्लाह ताला ने और वो बोल सकता है, तो उसका सिर्फ लिख कर ऑफर करना ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो उसको जुबान से बोलना पड़ेगा, तो वो बोलेगा। According to these jurists, contract in writing is allowed only when the person is unable to speak. अगर वो शवाफे कहते हैं कि अगर वो बोल नहीं सकता तो फिर सिर्फ उस सूरत में हम उसको अलाउ करेंगे कि वो रिटर्न सूरत के अंदर अपनी ऑफर दे। अदरवाइज जो बोल सकता है वो बोलेगा, और बोल सकता भी हो और फिर भी ना बोले और रिटर्न सूरत में दे तो इमाम शाफी कहते हैं कि हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे कि ये उसकी ऑफर है। Sir, I have a question.